नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। दिस इज जस्सी परमार और मैं आज आपके सामने हाजिर हूँ एक स्पेशल एपिसोड में। देसी अड्डा लाइव में आपके साथ जुड़ने जा रही हैं एक स्पेशल पर्सन जिन्होंने जिंदगी के कुछ पन्नों को फरोल कर, जिंदगी के कुछ रिवाइंड करके उसमें से कुछ पॉजेस लेके कुछ ऐसी तस्वीरें खींची हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उनकी आने वाली बुक में ऐसे रिफ्लेक्शंस हैं जो आप सबको एक नया पर्सपेक्टिव देंगे। मुझे तो दे ही रहे हैं, बिकॉज़ एक बुक के कुछ अंश पढ़े हैं। प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग माय गेस्ट टुडे, जिनका नाम है रेशमी नसीहर और जिन्होंने अपनी दूसरी बुक लॉन्च करने जा रही हैं मेरे साथ देसी अड्डा लाइव में। दिस इज द लॉन्च स्पेशल, लिव्ड फुल्ली, फेल्ट डीपली, कन्वर्सेशंस विद इन। प्लीज वेलकम रेशमी नसीहर टू देसी अड्डा लाइव। रेशमी जी, नमस्कार, हाउ आर यू? नमस्कार जस्सी, थैंक यू फॉर हैविंग मी और ये मेरे से वार्तालाप करने के लिए थैंक्स जस्सी फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म. Good morning, good evening, good afternoon to all the listeners, whichever part of the world they are. Thank you for giving your time. And I'm very excited, Jesse, very excited to be here. I can see your excitement. I can see the Uh, book lived fully, felt deeply. Wow, a yeah. dialogue with self. Uh, First of all, congratulations for taking the courage to write this book, and a bigger congratulations on achieving the first landmark. मैंने सुना है you've already sold 100 books in India. yes, Jesse, that's true. And that was very fulfilling because the book got published in India because my publisher is in India, the Notion Press. तो उन्होंने अगस्त में इंडिया में पब्लिश की थी एंड बाय द टाइम इट कम्स ऑन amazon.com और amazon वर्ल्ड वाइड इट टेक सम टाइम. तो ये जो पिछला महीना था इंडिया में उसी में हमारा 100 बुक सोल्ड माइलस्टोन आ गया. एंड व्हेन आई सॉ द ईमेल फ्रॉम नोशन प्रेस, व्हेन आई सॉ माय बैच, I was like really, I don't know, thankful to the Almighty. Congratulations once again. I think it's a big landmark, big achievement. देखो, पहले तो putting together your thoughts, it's not easy. फिर taking the courage to write it, and इतना एफर्ट लगता है, मुझे पता है, कोई भी चीज को प्रोड्यूस करने में या राइट करने में। आपकी वो मॉरल सपोर्ट या आपके पीछे कौन था जिसने आपको इसके लिए एनकरेज किया? अगर मैं ये बात करूं किसने एनकरेज किया तो डेफिनेटली ऑल द फैमिली मेंबर्स, ऑल माय फ्रेंड्स, whosoever has read my poems or my stories was always asking me to write a book. But in particular, if I have to point one person, that's Christine and Sunil. वो हमारे फ्रेंड हैं, इंडिया से हैं. वो हमारे पास नीदरलैंड्स में आए थे और हम जी, शाम को बैठे हैं, घूम के आए हैं. फिर मैं उनको अपनी एक कविता सुना रही थी और उसके बाद जिस ढंग से जो क्रिस्टीन की आंखों में था जब उन्होंने मेरी आंखों में देखा और मुझे बोला तुमको पब्लिश करना चाहिए, तुमको ये सब संभाल के एक किताब बनानी चाहिए, यू शुड लीव अ लेगेसी बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ योर थॉट्स. Something happened in that moment. I was driven to publish. That gave me confidence. Thank you, Jesse, for asking that. and I want to come to that moment. I want to come to that spark. लेकिन लेट्स डू रिवाइंड। मैं जानना चाहता हूँ, एक हरियाणा की छोरी जो गांव से उठ के आई है, वो नीदरलैंड में बैठ के Mm, मेरे चैनल पे मेरे अमेरिका में बात कर रही है और पूरा वर्ल्ड mhm. इस कन्वर्सेशन को देखेगा। टेल अस लिटिल बिट अबाउट योर जर्नी, और उस जर्नी में शुरुआत से, गांव से जहां पर आप रहते थे वहां से, हाउ डिड इट स्टार्टेड एंड व्हेन यू फेल्ट दैट यू कुड बी अ राइटर, देयर इज अ राइटर इनसाइड यू, एंड कहां से शुरू हुई, क्या हुआ? तो जैसे मेरी पैदाइश पूना की है, जी। 12 जुलाई 1975. बट मेरा वजन नॉर्मल बच्चों से ज्यादा था और एक मिनट, मामा को
दो चीजें, दो चीजें जो कि हाँ, लड़कियां बोलो। बिल्कुल नहीं बताती हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना वजन। ओ माय गॉड, दिस इज सैल्यूट। तो अच्छा। बट बट आई हम्म। एम समहाउ प्राउड ऑफ दैट थिंग दैट ऐसा था, क्योंकि उसकी वजह से जैसे मेरे को डॉक्टर्स ने मम्मा को एडवाइस किया कि मुझे कैरी ना करें, अच्छा। और मेरे को नानी के गाँव में जाना पड़ा। हम 4 बहनें हैं और तीनों मुझसे बड़ी हैं, ठीक है? और फैमिली में कहीं न कहीं एक ख़्वाहिश थी कि लड़का भी हो, तो अगर मम्मा को दोबारा से कंसीव करना था, तो इट वाज़ इम्पोर्टेंट कि वो अपना ध्यान रखें, और मेरे को फिर नानी के पास भेजा। और आज मेरे खुद के 2 बच्चे हैं, तो मैं समझ सकती हूँ जब मम्मी ने वो डिसीज़न लिया होगा, उनको खुद को कितना मुश्किल हुआ होगा। जी। और उन्होंने पूरे विश्वास के साथ नानी के पास मुझे भेजा। मैं रानीला गई, हमारा गाँव, मैं उसको अपना गाँव बोलती हूँ। हमारा गाँव रानीला, और वहाँ मैं रही, मेरे हिसाब से मैं 4 साल रही। मम्मी कहती हैं कि 6, 7, 8 महीने रहे, फिर समर हॉलिडेज़ में जाते रहे, आते रहे। लेकिन वहाँ पे बहुत प्यार मिला, बहुत प्यार मिला, लेकिन जी। साथ में कुछ एक ऐसी चीज़ें भी देखी जो अ, उस टाइम तो समझ में नहीं आई कि किसी भी बच्चे के साथ नहीं होनी चाहिए, लेकिन आगे जाके समझ में भी आई। पर समहाउ मेरा हमेशा से दिमाग ऐसे चला है जैसे कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है जो मेरे हाथ में नहीं है, जिसको मैं रोक नहीं सकती हूँ, या जो मेरे साथ नहीं किसी और के साथ हो रहा है जो मैं देख रही हूँ, पर मैं उसमें कुछ कर नहीं सकती, सिचुएशन ऐसी है, तो मैं उस बारे में लिखती थी। ये मुझे याद है। तो ये मेरे को याद है तो कि कौन कितनी एज रही होगी आपकी उस टाइम पे, 4-5 जब साल? मैंने पहली बार कुछ लिखा था, तो मैं 7-8 साल की थी जैसी। लेकिन मेरे अच्छा। दिमाग में हमेशा वो चीज़ें स्टोर्ड थी कि भई अगर ये हो रहा है, मैं ये सोचती हूँ ये चीज़ क्यों हो रही है? मेरे नज़रिए से इस चीज़ को अगर हमेशा के लिए समाज से सुधारना है, तो हमें क्या करना चाहिए? मेरी थॉट ऑफ चेन यही रहती थी। और मुझे याद है मैंने जब वाह। 7-8 साल में लिखा था सबसे पहली बार, उसके बाद मैंने उसको फाड़ दिया था। ओह। हुँ, हाँ। अच्छा। हुँ, एंड डिड यू शेयर दैट विद एनीवन जब आप लिखते थे? किससे शेयर करना शुरू किया आपने पहले, एंड व्हाट वाज द रिस्पांस? नहीं, मैंने तब तो नहीं शेयर किया। मैंने बहुत लंबे टाइम तक किसी से नहीं शेयर किया कि मैं लिखती हूँ। जी। जब मैंने सबसे पहली बार शेयर किया था, तो मेरी सिस्टर सबिता, जो मुझसे 1 साल बड़ी हैं, उनके लिए मैंने एक डायरी जी। बनाई थी जिसमें कुछ ड्राइंग्स, वन लाइनर्स लिखे थे, और उनको वो डायरी बहुत ही पसंद आई थी। हम्म। और उसके बाद मैंने अपनी कविता शेयर करी थी मेरे फ्रेंड्स के साथ, और उनको बहुत पसंद आई थी, और एक कविता तो मैगज़ीन में भी छपी थी उस समय। पर अ, इतना वो नहीं हुआ कि खुल के पूरा बता सकूँ कि मैं क्या लिखती हूँ, बट मैं बहुत ज़्यादा लिखती थी। मेरी सिस्टर इन लॉ ने एक बार मुझे रात को भी देखा था कि हम सब सोने गए 2 बजे, और 3 बजे मुझे कोई थॉट आया। मैं खड़ी हुई, लिख रही थी। उन्होंने पूछा, "भाभी क्या कर रहे हो?" मैंने कहा, "जब मुझे थॉट आता है मुझे तभी लिखना पड़ता है, नहीं तो वो शब्द चले जाते हैं।" तो देन शी न्यू कि मैं जी। लिखती हूँ। वाह। एंड आई एम नॉट अ राइटर, बट आई कैन टोटली रिलेट टू इट। मुझे भी ऐसे एक बार मैं कुछ स्क्रिप्ट लिख हाँ, रहा था किसी मूवी के लिए, एंड वो रात दिन वही ख्याल आते थे, एंड देन जब आइडिया आता, आई वांटेड टू राइट इट डाउन राइट अवे। हाँ। सो दिस इज फैंटास्टिक। तो राइटर बनने के की जो जर्नी है, वो कब शुरू हुई? ये तो ठीक है, आप लिखते थे, किसी को सुना दिया, बट बुक लिखने का थॉट कहाँ से आया? हाउ डिड इट हैपन? सो ड्यूरिंग कोविड टाइम जैसे मैंने एक हिंदी लिटरेचर क्लब स्टार्ट किया था। और आइडिया उसका ये था कि दैट वाज इन या दैट नेदरलैंड्स। वाज़ इन नेदरलैंड्स, हाँ। और ओके। उस टाइम पे ये था कि मुझे हिंदी लैंग्वेज से बहुत प्यार है। मुझे हिंदी भाषा जी। मतलब रिस्पेक्ट, और ये लग रहा था कि धीरे-धीरे खत्म हो रही है, ठीक है? तो मैंने एक हिंदी लिटरेचर क्लब शुरू किया, जिसमें मेरी कुछ सहेलियाँ यहाँ से जुड़ी। हम 3-4 तो हमेशा कंसिस्टेंट रहते थे, बाकी आते-जाते रहते थे मेंबर्स।
और हमने नॉवेल्स पढ़ने शुरू किए जो हमको अच्छे लगते थे। फिर एक हम्म, दिन ऐसे ही नॉवेल पढ़ते-पढ़ते मैंने बात करी उनसे कि भई हमारे अपने एक्सपीरियंसेस भी बहुत हैं। क्या हमको वो लिखना चाहिए? आप में से कोई लिखना चाहेगा मेरे साथ? और फिर सत्या एंड शांति वर इंटरेस्टेड, तो हमने अपनी जो बुक दैट वी पब्लिश्ड पुचका इन द पोल्डर, उसमें हमारी कहानी है, उसमें हमने अपनी कहानी लिखी, ठीक। लेकिन जी, पैरेलली मैं प्रोफेशनली आई एम अ सर्टिफाइड कोच, मेंटर एंड फैसिलिटेटर एज वेल, एनियाग्राम ट्रेन्ड। तो जब मैंने ये सब ट्रेनिंग की और जब ये लोगों को कोच या मेंटर किया, या जब मेरी खुद की कोचिंग हो रही थी, या मैं हमेशा अपने साथ एक मेंटर रखती हूँ, तो उस टाइम जो कहानियां मैंने सुनी, और जब मैं ये पुचका इन द फोल्डर के लिए अपनी कहानी लिख रही थी, तब मुझे लगा कि नहीं, उन कहानियों में उन कहानियों को भी दुनिया तक पहुंचना चाहिए, हर किसी के लिए वो इम्पोर्टेंट है। उससे कनेक्ट लोग मेरी कहानी से ज़्यादा करेंगे, क्योंकि इट्स मोर डिवर्स, इट हैज़ मोर फॉर पीपल टू टेक फ्रॉम दोज़ थिंग्स। और उसमें वो रियल स्टोरीज़ हैं, लेकिन कोर उसका ये है कि कब उन लोगों की लाइफ में वो मोमेंट आया, या किस बात से आया, कि दे स्टार्टेड कनेक्टिंग विद देयर सोल, देयर बॉडी, देयर माइंड, और फिर उन्होंने लाइफ में क्या चेंज देखा, कैसे उन्होंने अपना पैशन समझा, और कैसे उन्होंने एक्सेप्टेंस दी अपने आप को, टू हैव अ परमिशन टू फील द वे दे फील। तो वो मैं साथ में लिख रही थी, और अ, बस फिर कब किताब छप गई, जैसी पलक, मुझे ऐसा लगता है पलक झपक के छप छप गई। बट 2 साल की जर्नी थी, और इसमें बहुत से लोगों का योगदान रहा। मेरी पब्लिशिंग मैनेजर प्रिया, अमेजिंग पर्सन टू वर्क विद। Shreyash from Notion Press. He's amazing to follow you through, to guide you when you need him. So, family, friend, extended family, and friends, everybody supported me during this journey. Chavi, Anil, Udit, my furry baby Bruno. Uh, he reminds me every day what it means to stay grounded. And then I was talking about Udit, yesterday we were doing the setup together. And not only that, everybody during this journey was very happy that I'm writing, I'm expressing, I'm putting my words or my thought process for others to carry forward. I would like to take this opportunity also to thank my extended family, like my mom, my sisters, my brother, my bhavi, my sister-in-law. You won't believe how happy they get when I achieve something or anyone in the family achieves something. And if I'm forgetting anyone here, sorry, I'm just too overwhelmed sharing my gratitude for everyone here. Role. Because इन चीजों के लिए आपको टाइम चाहिए, आपको जी, अपना स्पेस चाहिए, राइट? और उस स्पेस को जब आप क्लेम करते हो ना, तो आप सब कुछ नहीं कर सकते, कुछ छूटता है। और उस टाइम पे फैमिली की वैल्यू आपको समझ में आती है, कि इन लोगों ने उस टाइम पे ऐसा नहीं कि आपको वो टाइम दिया, पर इन्होंने को खुशी होती थी कि मैं जब लिख रही हूँ। मेरे से ज़्यादा मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली खुश हुई थी जब ये किताब छपी थी, आई कैन टेल यू दैट। देखिए, दे से कि इट टेक्स अ विलेज टू अचीव समथिंग लाइक दिस, लाइक बहुत सारे लोग हर एक जर्नी में साथ होते हैं एक पर्सन को आगे लाने में, एंड आई एम रियली ग्लैड योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, योर कोचेस, मेंटर्स played a role. Let's talk about the book, lived fully, felt deeply. Is it your story, or is it story of people, और इसमें क्या है, what can people expect in the book, or if you can मम्म। highlight something for us. या तो जैसे बुक का जो टाइटल है, लिव्ड फुल्ली फेल्ट डीपली, ये स्टेट कब आती है? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये सोचने की है कि कब हम कह पाते हैं कि आई लिव्ड माई लाइफ फुल्ली, वो एक बात है। एंड आई फेल्ट इट ऑल्सो डीपली, वो एक अलग बात है। उसके लिए आपको अपने इमोशन से कनेक्ट होना पड़ता है। तो इस बुक में जो कहानियां हैं, जो लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, वो मेरे कोचिंग और मेंटरिंग जर्नी के हैं। व्हेन आई वाज कोचिंग पीपल एंड व्हेन आई वाज मेंटरिंग देम, व्हाट हेल्प्ड देम, व्हाट ट्रिगर्ड देम। और ये कहानी ऐसे नहीं है इसमें कि जैसे मैं कुछ बता रही हूँ, नहीं।
इसमें 5 सेक्शन हैं, हर 5 सेक्शंस का एक थीम है और हर सेक्शन में 2 स्टोरी हैं। उन 2 स्टोरीज़ में भी एक स्टोरी में 2 लोगों की स्टोरी पैरेलल में चल रही है और वो एक-दूसरे से बात कर रहे हैं। तो अगर आप वाह! देखोगे टैगलाइन अ डायलॉग विद सेल्फ, सो दैट केम फ्रॉम देम, तो इसमें रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं बट डेफिनेटली प्रेजेंटेड इन अ फ्रिक्शनल वे। उनके नाम वो नहीं है, उनकी पहचान रिवील नहीं करी है, उन सब की परमिशन डेफिनेटली ली है किताब लिखने से पहले। और मुझे बहुत अच्छा लगा उनमें से जब इन्होंने वो किताब पढ़ी, दे सॉ देयर रिफ्लेक्शन एंड दे सॉ कि ओ माय गॉड, दिस इज द सेंटेंस दैट रेशमी सेड ड्यूरिंग द सेशन, बट नाउ आई हैव प्रेजेंटेड इट कि वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं और देन हाउ दैट पर्टिकुलर सेंटेंस चेंज देयर लाइफ। वाह! छोटा सा एक बात बताती हूँ, जैसे इसमें एक जगह पे एक कैरेक्टर बोलता है कि नाउ आई हैव परमिशन टू फील माय फीलिंग्स। हुँ, तो सोसाइटल नॉर्म्स की वजह से वो इंसान कभी ये सोच ही नहीं पाया कि नहीं, जो मुझे लग रहा है वो मुझे लग रहा है और वो मेरे लिए वही सही है। जी। सो वो एक्सेप्टेंस, या तो दिस तो बुक इज मोर फॉर समवन हु वांट्स टू। मैं एक लाइन पढ़ दूं बुक से, बिल्कुल, प्लीज? केक नहीं, मैं तो और भी चीज़ें या आपसे पूछना चाहता हूँ, बट प्लीज़ गो अहेड। या so this book you can treat as a quiet companion for those who feel more than they can say and they know more than they can explain. वाह! Yeah, yeah. सो एज़ यू सेड दिस इज़ मल्टीपल लोगों की कहानियाँ हैं इसमें। Mhm. ऐसी कुछ स्टोरी, ऐसी कुछ इंसिडेंसेस ड्यूरिंग योर सेशंस जो इसमें आपने कैप्चर किए हैं या नहीं किए हैं, दैट टच्ड यू और दैट आर लाइक वेरी स्पेशल। आई नो एवरीथिंग इज स्पेशल, बट कुछ ऐसे होंगे एक दो किस्से दैट कैन मोटिवेट एंड इंस्पायर अदर पीपल दैट टच्ड यू योरसेल्फ। तो इसमें जैसी जो कहानियां हैं, तो अगर मैं बोल रही हूँ 5 सेक्शन और हर सेक्शन में 2 स्टोरीज और उन 2 में भी 2 स्टोरीज, तो इसमें 20 कहानियां हैं और वो उन लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने फुलफिलमेंट लाइफ में फील करी है। तो दे ऑल आर सो क्लोज टू मी एंड ऑल आर वेरी वेरी इंस्पायरिंग। लेकिन आई नो देयर इज अ टाइम कॉन्स्ट्रेंट, तो मैं एक कहानी शेयर करती हूँ। इसमें एक कहानी है एक मैनेजर की। ही इज वेरी सीनियर बोर्ड लेवल मेंबर एंड उसका ये विश्वास था लाइफ में कि जो लोग मीटिंग्स में लाउड बोलते हैं, अपनी बात आगे रखते हैं, वो एफिशिएंट हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं। और उसकी टीम में एक लेडी ऐसी आई जो बहुत डीप है नॉलेज में एंड बहुत एफिशिएंट है, बट वो बोलती नहीं है। तो ही स्टार्टेड फीलिंग कि मेरी टीम में एक मेंबर है विच इग्नोर्स मी, डजंट टॉक इन द मीटिंग एंड डजंट कंट्रीब्यूट आल्सो। तो उसने एक जजमेंट बना ली, जैसे जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर या जो सोसाइटी से उसने सीखा या कंडीशनिंग जो उसकी रही उस हिसाब से। एंड समवेयर दिस वाज बॉदरिंग हिम। तो जब हमारी बात हुई, जब वो मेरे से सेशंस में हमारी बात हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने, क्योंकि मैंने उस लेडी का सारा प्रोफाइल, उसका मोटिवेशन लेटर, सीवी सब देखा था। एंड देन आई आस्क्ड हिम कि तुमने कभी वो पढ़ा, उसका मोटिवेशन लेटर? ही सेड नो, उसमें क्या पढ़ना है, इट अलाइन्ड विद द जॉब सो इट वाज वेरी गुड। मैं कहा नहीं, एक बार पढ़ो। ही रेड इट और उसमें उस लेडी ने साफ मेंशन किया था, आई एम हाईली एफिशिएंट व्हेन यू अप्रोच मी वाया ईमेल। वाह! I do not talk in the meetings. I listen. My strength is listening, but my work will speak for itself. और उसके अमेजिंग। बाद मुझे उन्हें कुछ समझाना नहीं पड़ा, जैसे उन्होंने उनको ईमेल लिखी, उनको जवाब मिला, उन्होंने देखा कि इन्होंने कितना काम किया है। तो एक एक नई तरह की बिगिनिंग हुई उस इंसान की और वो एक अलग तरह का लीडर उभर कर आया। उसने इतनी प्रोग्रेस करी एज़ अ लीडर, इतनी रिस्पेक्ट उस बंदे को आज मिलती है एज़ अ लीडर। He writes so many thank yous to me, but I know it's not me, it's him who did it. वाह!
एंड एक तो मीटिंग उनकी इतनी अच्छी थी जिसमें इसमें उस कैरेक्टर का नाम है समायरा, उस लेडी का। तो समायरा इज अटेंडिंग अ मीटिंग इन अ डिफरेंट प्लेस, डिफरेंट organization, and he's also there, and she watches him on a screen when he is quiet and asking others to talk and not making judgments. Wow. Wow. Yeah. Yeah. I- and you are absolutely right. और मैंने भी बहुत ऑब्जर्व किया है कि there is a power in silence. There is a power in listening. और ये जो पावर है लिसनिंग की, वो हर एक में नेचुरली नहीं आती, होती है, बट somehow we've forgotten that power कि जितना आप सुनोगे, uh, उतना ही आप गेन करोगे, और क्वाइट थिंग्स कैन बी मोर पावरफुल देन द डायल. True. तो Very true. आई डोंट नो वो लेडी कौन है, लेकिन मेरे पास एक टेस्टिमोनी आई है, तो वो टेस्टिमोनी मैं प्ले करना चाहता हूँ. एंड आपकी जान पहचान वाली होंगी. एंड Uh, लेट्स हियर व्हाट शी हैज टू से, एंड यू टेल अस कि ये वही है या डिफरेंट स्टोरी बता रही हैं. लेट्स roll the tape and go from there. Hello, my name is Desi Adda, and I'm a Ugandan learning and development professional. I have had the amazing privilege of getting to know Reshmi Nashier, both professionally, because we have facilitated together, and also because I have read some chapters of her book, Lived Fully, Felt Deeply. As an introverted leader in a world that's so fast moving and that's so loud, I've often felt the pressure to keep up, to be more visible, more decisive, more fast than feels natural to me. And that's why reading her book, Lived Fully, Felt Deeply, felt like such a rare gift. A gift because it felt less like reading a book and more like being given permission to pause and ask myself the questions that I often haven't had time to. The stories in the book don't shout, they whisper. They remind us that some of the most important shifts in our lives don't begin loudly, but rather quietly, in a pause, a hesitation, in the subtle knowing that we often have been trained to ignore. So instead of pushing for easy answers, this book instead invites us to ask better, deeper questions of ourselves and to ensure that we're being more honest about who we are and where we are at. And in so doing, it offers us something that feels almost radical in today's world, which is the chance to lead and live with honesty, authenticity, and care for ourselves and others. For me, it was a reminder that leadership is not about having the loudest voice in the room. No, it's about creating space where truth, even the quietest kind, can be heard and appreciated. And that's why it's a book I know I'll read again and again. Wow. Wow. Is she talking yes. about the same incidents, or yeah, is it a coincidence? She's talking about the same character because when I took the testimonials, so we gave like two, three sections to everyone, not the whole book as such. So the story that she is referring to from the book is pretty much that, but it aligns with how she was thinking, okay, and how she made her belief or what she was made to believe actually. And she's a sweetheart. She's an amazing human being. But I met her. She's also a facilitator, coach, and a mentor. We both did a workshop together in Uganda for 25 leaders from East, Southern Africa, and South Sudan. She was for the communication workshop, and I was for Enneagram as well as cultural value, aligning with organizations' cultural value, philosophy, mission, and vision. When I met her on the first day, I knew there's a connect. She knew there's a connect. And we just became friends in a moment. It was just because we think alike, we feel alike.
but not when I say alike, it's not that she had a belief Mm. that, she has to be loud and all of that. Whereas I come from very subtle and a pause moment, but still something made our friendship even grow stronger from there. Yes. But I'm so happy to hear this. I knew her testimonial, but then when you hear something happens. Yep, wonderful. Rashmi, book you mentioned is about your experiences of stories of people that you have encountered in your life. Any other story जैसे ये बहुत ही powerful story थी that you think you want to highlight today that can open up some doors and motivate people to either read the book or at least change their lives or touch their lives if they are watching this episode. Yeah, okay, there is, sorry, I'm picking one, and I hope it's not taken as bias to one, but the moment that I have now is, so there is a story about two female characters in this, and one of the female characters is eventually, not by choice, but reaching every place slightly late, by 10 minutes, by 15 minutes. And there's another lady in, or another female character who is always on time. Hmm. She is from social media influencer or a film actress kind of a background, the one Mhm. who's always reaching on a time. And Right. they both meet in a gathering. And when one of them is late, the other one remarks a comment that you need to respect others' time and be there on time. Uh-huh. The And something, when she made this sentence, she looked into the eyes of the person who was late, and she realized the name of the character in this story is Ananya. Ananya realized, no, this was not right comment. I shouldn't have made this comment. But then the afternoon went and the lunch happened, but later she hosted lunch at her place. She invited her. She came on time and she rang the doorbell, and the Ananya says, "Oh, you are on time. Thank you." And the lady says, "I didn't want to be disrespectful to you because I think you take time, coming on time, as a respect." And then the doors opened. Somehow the doors of conversation between the two open. And the lady who is actually requesting to be on time started sharing her story, that how she used to be late for her auditions and everything. And one of the producers told her that she needs to respect time, otherwise, she'll be left behind. And then she started reaching 15 minutes, 20 minutes early, and that didn't help. Mhm. That didn't help. She was going so harsh to be on time or 20 minutes early, not giving her, not intentionally late. Sometimes if situations happen, if your kid gets sick last minute and you have to call someone, you get 5 minutes late. Or the other character in this story does a business of candles, and sometimes in one of the incidents her candle wax melted and she had to stay back to put it in the right temperature, but she was just late 10 minutes. But to have this space, yes, people can be late. It's not disrespect, it's not intentional. Listen to their story, listen to their rationale if it makes sense. It shouldn't be habit. I agree. But then Ananya shared her story and then they became friends. In that moment, they both started talking and they both learned that time and disrespect is not connected. Somebody might be coming on time and still not be holding respect for you. Wow. Wow. And I'll just tell you the title of that story, Jesse, Mhm. because maybe when I'm saying it like this, so it's goodness, it's in the she was never late, just lost. Oh, she was never late, just lost. I know a lot of friends like that who are not intentionally late, but they're somehow lost in
some things that are occupying. Nobody कोई जान के नहीं करता. This is I totally agree with you. Uh, No, and she used to put 4 alarms to be on time, wow. but she's a single mom. She had 3 kids. And also, she's living not a luxurious life that there is a driver or something. There's a limited income that she had. With job, she had to do her business as well. So everybody comes with their story, their life. Give them space or try to understand their story at least. Absolutely, absolutely. Reshmi, But now she Mhm. comes on time, and the other one has a respect for somebody coming late. Both That's had sessions with me, so I was like, wonderful. amazing. So, Yeah. so in your career, you had achieved a status. जिसके लिए a lot of people can they can do anything for that. Reaching in a corporate ladder to a status where you're a global head of HR, or reaching at a VP or higher level, senior VP or executive level. And tell us about that incidence when you said no to something. Oh, I should have talked about another story in this book, Mhm. which kind of actually it completely resonated with my story. Uh-huh. And when I was writing it, and then I saw reflections of myself there, Right. Uh-huh. um, it is in the section Unseen Yet Driving. And the title of the story is The Invisible Yes. Um, so once I had this offer of being offer or a discussion around that, do I wish to be the global HR manager? And I immediately knew my answer. My body gave the answer before my mind. And I said, no, I'm really not interested. No disrespect, but that is not, I don't think so. My body is signaling me to say yes. I have served as a board member, and that is something that was very much aligned with me when somebody asked me that, do I want to be the board member? Do I want to give my application? My body and my mind and everything was so aligned. But when this was asked to me, I had to say no. And I really feel that blessed that I did that, because now I'm working as digital solutions manager, and the people I'm working, the kind of growth I'm seeing, probably wouldn't have been possible because that wouldn't align with my soul, my belief, or my values. Wow. It's very inspiring to see how you've taken a bold step to reflect some of these stories. And I want to take a small break, and I want to touch upon your journey of writing the book and some more things. And there are some more surprises at the end. So, friends, the book is being Mm. launched, and thank you, Reshmi, for joining us. And we will be right back. Lived fully, felt deeply on Desi Adda Life. Yeah, one sec, Jesse, because you said you want to take a break, but I wanted to hear your story because I know you also took such a step. So if you can just share, because I know it's very aligned with the same thing, right? With the Yes, same theme. absolutely, absolutely. Yes, we will. Mhm. Let's take a quick break. And Just following our conversation, Jesse, and I'm very, very curious to hear your story because I know you also followed your passion and you took a similar step in life. yeah, Reshmi, I think people who know me, they know one side of me, and people don't even imagine that I was heading uh, the technology department of some of the largest corporations like Microsoft and Oracle. I worked for Salient Systems and many others. So I was heading certain departments, and my last job was a VP of engineering. So Wow. and I've been carrying on my passion in parallel. But एक time ऐसा आता है like where you realize why I am doing this. मैं क्यों कर रहा हूँ, और मेरे मेरे मन में ये सवाल आता था कि why I am here, why not here. So something happened one day.
and I don't want to take too much time because it's about you, your story, and kabhi hum baat karenge to I'll tell you my deeper story. But something happened one day. I was sitting in office. Some some incident happened, like you talked about louder voices and all that, right? Yeah. And um, I was under so much stress with no fault of mine, and I was trying to protect my team. And I had मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ गया था in my office sitting, and I called my wife and I said, I'm not feeling well. I need to go and see a doctor. That much stress. मतलब मैं और जॉब मेरी इजी थी बहुत, लाइक आई वुड गो एट Mhm. 9 o'clock, बी बैक बाय 4, बहुत ही इजी. बट देर आर सर्टन थिंग्स दैट पीपल, ऐसी सिचुएशंस आ गई थी. She supported me. She said, okay, we don't need to work and maybe you should pursue your passion. And thanks to her, I took that step, and like I'm spending hours and hours doing this. And then she was saying, like, now you're spending more time, but you're very happy. So it is when Yeah. you're Yeah. pursuing your passion, लगता ही नहीं कि आप Mm. कर रहे हो. It's more about what you are enjoying. And with that, I have a question for you. And मेरे साथ तो एक हो गया, but there are a lot of people I know who are trying to find what is the purpose of life, what they should be doing. कैसे उनको पता लगे? What is that spark? What is that trigger point? कि ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए. Lot of youngsters might be watching. A lot of people in our age group might be watching this episode. How do somebody know? He stop here. This is not for me, and this is for me. कैसे पता लगे? पहले तो जस्सी थैंक यू अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए. इट्स इंस्पायरिंग and I would love to wait to hear the whole of it. Yes. Um, and coming back to the question that you are asking, it's a very big question and it's a very big challenge for most of us. And it's okay. It's okay not to know your passion. It's okay not to know what is your purpose of life. ये आजकल क्या मतलब not even आजकल I'm saying today is now it's social media. पहले it was the social society, Yes. which doesn't give you time to accept yourself. You kind of start ऐसा होता है कि आप उसके साथ बहते चले जाते हो. हर जगह सोशल मीडिया पे आजकल आप देखोगे हँसते हुए चेहरे हैं, फ़िल्टर लगे हुए हैं, हर कोई सुंदर दिख रहा है, हर कोई यंग दिख रहा है. एक इल्यूशनरी वर्ल्ड क्रिएट हो गया है. तो आप अपने आप से कनेक्ट करने से पहले, आप एक अलग दुनिया बना लिया आपने, ना? और अपना पैशन ढूँढने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है कि आपको अपने बारे में पता हो। तो वो समय कहाँ से आ रहा है? ऐसा नहीं है कि आपको कोई गुफ़ा में बैठ के मेडिटेट करने से ही पता लगता है कि आप क्या हैं। लेकिन अगर आप जब मैं एक छोटी-सी बात बोलूँगी कि अगर आप जब पानी पी रहे हैं, क्या आप ये फ़ील कर सकते हैं वो पानी का टेस्ट मुँह में क्या था? जब आपने ग्लास को पकड़ा, आपके हाथों में क्या सेंसेशन आया? जब वो गले से उतरा आपको कैसा लगा? क्या वो पानी यहाँ चेस्ट पे रुक गया कि वो पेट तक गया कि उसने आपको पूरी तृप्ति दी? कभी-कभी जब आप पानी पीते हैं आपको ऐसा लगता है अब ज़िंदा हो गए फिर से। क्या ऐसा मोमेंट है? पर बहुत मुश्किल है क्योंकि आजकल देखो एआई है, सोशल मीडिया है। पहले सोशल सोसाइटी थी, है ना? उसने नॉर्म सेट कर रखे थे। तो एक कंडीशनिंग चल रही है लोगों की। तो टू ब्रेक दैट कंडीशनिंग, टू फाइंड टाइम फॉर योरसेल्फ, टू टेक दैट पॉज़, टू रिफ्लेक्ट एंड बी प्रेज़ेंट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। So even if you accept that and you start thinking that, okay, there is my purpose, this is my life, this is my body, I am gifted with this body, I am gifted with this mind. थोड़ा सा भी अगर इस तरफ सोचोगे ना, तो आपको अपना पर्पस खुद से खुद आगे आएगा। लेकिन इसके लिए हिम्मत लगती है जैसे कि आप
जो सोचते हो, जो आप असल में सोचते हो, उसको बोलने के लिए एक हिम्मत चाहिए। ये बैरियर्स को तोड़ना पड़ेगा कि दूसरा क्या सोचेगा जब मैं ऐसे बोलूँगा। जिसको अच्छा लगेगा वो आपके साथ रहेगा, जो नहीं अच्छा लगेगा वो निकल जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन आप अंदर से खुश होगे कि आज मैंने सिर्फ़ वो बोला जो मुझे पसंद है। किसी को दुःख देने या दर्द देने की बात नहीं कर रहे हैं, पर पूरा अपने आप को एक्सेप्ट करना। ये एक बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, हर किसी के लिए एक अलग तरह का कोचिंग या मेंटरिंग होती है टू फाइंड योर पैशन और टू एट लीस्ट गाइड देम हाउ टू फाइंड इट। ये मैंने बहुत सरफेस लेवल पे बात बोली है जी, जैसे, लेकिन जी, इट्स अ बिग जर्नी। मैंने खुद ने बहुत अपने आप पे काम किया है और मुझे बहुत टाइम लगा ये समझने में कि राइटिंग एंड रनिंग, सो आई डू मैराथन्स एज़ वेल, इज़ माय पैशन। ऑसम, ऑसम। या, सो आई कैन टेल यू एटलीस्ट मैंने 1-2 चीज़ें नोट की हैं कि व्हेन पीपल लाइक कोई आप ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको बिल्कुल थकावट ही ना, आप घंटों तक भी करते रहो एंड यू डोंट या, फील बोर्ड, आई थिंक दैट इज़ वन क्लू। और यस, मैंने ये भी नोट किया है कि हुँ, हुँ, लाइफ में आपको क्लूज़ मिलते हैं। यू गेट हाँ, बार-बार क्लूज़ मिलते हैं। इट इज़ अप टू यू टू कैच दोज़ क्लूज़। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम आल्सो फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड एंड मैं जब बहुत छोटा था, 5 साल की उम्र में, माय डैड के यूनिट में प्ले हो रहा था एंड दे वांटेड अ किड टू बी ऑन द स्टेज एंड आई रिमेंबर दैट मोमेंट व्हेन दे पुट मी ऑन स्टेज एंड आई फेल्ट जब वो प्ले हुआ उसके बाद मैं नीचे आया आई फेल्ट दिस इज वेयर आई बिलोंग टू एंटरटेनमेंट एंड स्टेज और मैं 5 साल की उम्र उम्र में मुझे वो क्लू मिल गया था और आज मेरे को इतने साल लगे उसको रियली मैच्योर करने में आई एम नाउ फुल्ली डेडिकेटेड माय लाइफ टू हाँ, entertainment and media. That's what I enjoy. या, So या, या। यू आर सो राइट जस्सी, एंड थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट, क्योंकि ना जब आप वो चीज़ कर रहे हो जिसमें आपका पैशन है, टाइम कहाँ जा रहा है, वो आपको एनर्जी देता है एक्चुअली। that's true. उससे आपको मोटिवेशन आता है और करने का, उसको और बढ़िया करने का। तो पर कभी-कभी जैसे ये भी होता है कि आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि आप पैशन फॉलो नहीं कर सकते। तो इस किताब में एक रनर की कहानी भी है, जी। और ही लॉस्ट हिज लेग एंड ही इज़ अ रनर इन हिज प्राइम, एंड देन हाउ he composes himself, finds his calm, and aligns in finding something else as guiding light or support. वो इसमें है, लास्ट सेक्शन में है उनकी स्टोरी लूका की, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी इंस्पायरिंग। ऐसा भी होता है लाइफ में जैसे कभी कभी, और मैंने जब उनके साथ मेंटरिंग सेशंस किए थे तो आई वाज अमेज्ड बाय हिज आउटलुक। Hmm. सो लेकिन जब यही कैरेक्टर किसी और कैरेक्टर के साथ मिल रहा है तो the way he's putting things and the way he's saying things is also a something as a guiding factor for the other one. So in the book you will find these kind of things as well, that what if you found your passion, the circumstances are so you can't follow it, Yeah. how to make most of it. Mhm. So Yeah. do you mind sharing what is he doing right now और उसने कैसे वो अपना complementary passion find किया and what is he doing? Okay, so you know what, every story in this book, after the story has journal prompts for the Mhm. readers, Mhm. because I wanted to make a book which is not one directional. Yeah. So I didn't know how to do with that with the writing. But then what I did was, so there is a story, and then after the story there is from me to you section where I have shared my incident, similar incidents, or my takes from the story, and then given journal prompts for the readers to carry forward those. Mhm. And after that, there is advanced journal prompts as well. Like if they want to go slightly deeper into it, what it will be, right? But now going back to the story of Luca, right? This is under section 5, which is returning to self. And the
story name is The Muscle That Remembered. Yeah. Mhm. And The Muscle That Remembered is about Luca who lost his legs and he's a runner. Then what he's doing in his life, that was your question, right? Yeah, Uh, I would leave some curiosity for you as well, Jesse, there. sure. But it's a passage that I will love to read from his Mhm. conversations with another lady, Amal. And Amal is diagnosed um, with a disease. I will not reveal a lot here. And she has an interaction with Luca and how she learns that life still can be beautiful when you are given these challenges which are not in your hand. You haven't contributed to those, right? So give me a minute. Uh, so he motivated Amal to write a diary, to start writing a diary, but not about what you do, but what did you feel today? In that diary, Amal is writing on March 14th, I did not feel grateful today. That's okay. Then on Wow. March 15th, she's writing, I felt the sun on my scalp through the scarf. It reminded me I am still here. So, when people have cancer, they lose their hair, right? They put scarf. But how a shift happened to Amal when she met Luca. Wow. And that's what Luca is doing. That's the Amazing. impact. Yes. Amazing. This is fantastic. I think this book, Uh, earlier I was thinking it's only for certain people. I think it's for everyone. मुझे ऐसा फील हो oh, रहा है. Everyone uh, can yeah, benefit from it. sorry, I might have a moment here, but I will take still 2 minutes of yours, Jesse, to read which, mm, so what Amal was talking to me, so Luca was talking to me when we were having the sessions. He was saying, I was an athlete, right? But then in the conversation, I asked him, were you a born athlete or you became one? And that day in his journal, he wrote, I was not born an athlete. I became one. And I can become something else. He got his belief that day. So not revealing more here, but yes. So No, yeah, these stories are for everyone and anyone. absolutely. No, I totally get it. कि oh my God, this is so touching. This is so Yeah. emotional, and thank you for bringing these stories to life and putting this in your book. Lived fully, felt deeply. I think it's very important to take a pause. जो आपकी बुक में भी लिखा, आपने बार बार कहा भी है, और मैं कॉन्शियसली अब आपसे बात होने के बाद मैंने एक सिप लिया कॉफी का, मैंने पिया, उसको फील किया. आई कुड really taste it. How important it is to enjoy the moments, because life तो हमारी limited है. Anything you want to add on that? Taking a pause, enjoying the moment. For me personally, I feel, and with the people that I have observed, when you take pause, you become present. Right? And I firmly believe all of us have a pearl inside. And when we connect with our presence, we find our pearl. Wonderful. All right, it's time to bring another person who's given a video testimony. Let's Oh, see wow. what she has to add.
I am truly excited to very soon start reading this book. Lived fully, felt deeply. A dialogue with self by Reshmi Nashier. I'm a coach and I'm so curious about this book. I think there will be so much wisdom in here, so much richness that I can bring into my coaching sessions or recommend to my clients to read. Because there's such wisdom in what Reshmi has shared so far on LinkedIn. I think that's just a hint at what's going to be inside this book. And so if you look closely, there's the image of a dragonfly on the cover. Let's see if I can get it. And I'm really curious because I have the feeling that that's going to mean something, mean a lot in this book. And I'm very curious what that's going to be. So I'm going to dive in very soon and probably read it straight through to the end. It's a beautiful book, and there's lots of recommendations by readers on the back. There's a summary here, and of course, a bit of information about the author, about Reshmi. I'm so excited. Looking forward to diving in. And as you can see, I love books, so this is going to be one of my next favorites. Who's she and how she related? She's Marjolaine Fleur, and I she's my coach, she's my mentor. I tell her a lot that she's infectious. Her energy, the way she holds you, it's it's beyond commendable. And I'm lucky to have her in my life. And when she read the book and she gave the testimonial and she dropped me a note as well. I, some people you hold very high regard for, and when they say something like this, it's fulfilling. So yeah, she's an amazing person. That's all I can say. She's a Wow. lovely coach, lovely mentor, and a beautiful human being. A coach, your mentor, your coach, Yeah, right? She's reading your book and she's giving yeah, you praise. Like how what's your feeling? Like कैसा लग रहा है आपको कि आपका गुरु आपको बता रहा है? Um, yeah. she's excited. She is not only excited, so she actually, yeah, sorry, she hasn't given testimonial on this one. She is somebody who I gifted this book. I wanted her opinion. So Great. when she told me that she's excited, that is her feeling. Yeah. That's when I was like, wow, moment. She flipped few pages and she told me that what is her feeling. And getting that sort of recommendation from your guru, उससे बढ़कर कुछ नहीं. कुछ नहीं। और उन्होंने मेरा लिंक्डइन पे भी आई एम राइटिंग वेरी रेगुलरली, आई एम राइटिंग ऑन सबस्टैक, आई एम राइटिंग ऑन इंस्टाग्राम, आई एम posting us every day a story on Instagram. Substack I'm doing weekly, and there is a frequency on LinkedIn which is twice a week. And she's reading it, all of those, and she says it's such a different outlook on leadership. And she's like, she was very happy for me. She was very happy for my progress, and that I am taking this leap. I am sharing what I think. And she said, there is so much for me to take from this. That I don't have words for it. Let's say it like this. Tell us about your transformation, your journey in a fast forward way. Because when you and I were talking offline, you told me कि आप गांव में पले बड़े, Mhm. आपके भाई बहन they were speaking English, fluent Yeah. English. From that person who does not speak, उनको चम्मच भी पकड़ना नहीं आता है, to this moment, this person who's sitting in front of me, mentoring and coaching a lot of people, ये and rejecting a high paying corporate job. ये सब कैसे हुआ? If you want to summarize that. बहुत लंबी जर्नी है जैसी, बट मैं कोशिश करूंगी थोड़ा शॉर्ट में। लेकिन हाँ, मैं शुरू में जब गांव में रही तो मैं हरियाणवी बोलती थी,
और उसके बाद जब मैं अपनी फैमिली में वापस आई अपने भाई-बहनों के साथ, तो देयर वाज़ अ मोमेंट जब उनको मैं शायद कनेक्ट नहीं कर पा रही थी या वो मुझसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। और वो लोग ऐसे भी बोलते थे स्कूल में कि ये फ्रांस से आई है, ये फ्रेंच बोल रही है, कि कहीं कोई मज़ाक ना बनाए। और मेरे साथ 1-2 किस्से भी हुए हैं ऐसे कि टीचर ने मेरे को बोला है, कैन यू ब्रिंग द की और गो एंड आस्क द की टू अनदर टीचर, और मैंने जाके बोला है कि ताले की ताली देना, तो सब हँसने लग गए। एंड एंड वाज़ दिस अ कॉन्वेंट स्कूल या कौन से स्कूल में थे? केंद्रीय विद्यालय, आई वाज़ केंद्रीय इन केंद्रीय विद्यालय, विद्यालय। क्या बात है! हाँ, ओके, हाँ। पर पता है जैसे तब भी मेरी सोच कैसे गई उस मोमेंट में, मुझे सोसाइटी का दोहरा रूप दिखाई दिया। केंद्रीय विद्यालय, जिसका नाम हिंदी है, हिंदी। उसको गर्व उन बच्चों पे है जो इंग्लिश अच्छी बोलते हैं। मेरे दिमाग में आया और मैंने उस दिन भी कुछ लिखा था भाषा के ऊपर, और एक ना अंदर एक टीस या खरोंच लगती है ना, उस दिन उस रेशमी के साथ उस उम्र में वो हुआ। और उसका रिज़ल्ट या इम्पैक्ट क्या था, जैसे कि मेरे घर में मेरी माँ बहुत अच्छी हरियाणवी बोलती है, मेरी सास हरियाणवी बोलती है, लेकिन मैं नहीं बोल पाती हूँ अब। मुझे बहुत टाइम लगा उन ठहाकों को अपने अनकॉन्शियस माइंड से निकालने में। और उस दिन शायद मैंने एक कॉन्शियस एफर्ट करना शुरू किया कि मैं हिंदी बोलूँगी, इंग्लिश सीखूँगी, ग्रामर इधर-उधर होती है मेरी इंग्लिश में। धीरे-धीरे एफर्ट्स किए, धीरे-धीरे एक पॉइंट ऐसा आया कि हाँ, जब मुझे अपनी हिंदी पे कॉन्फिडेंस आया, अपनी इंग्लिश पे आया। आज मैं अपनी बुक जब देखती हूँ इंग्लिश में, ये वाली लिव्ड फुली फेल्ट डीपली, ट्रस्ट मी जस्सी, मुझे इमोशंस वर्ड्स की वजह से खराब हों ये बिल्कुल नहीं चाहिए। तो मुझे बहुत टाइम लगा सही शब्द ढूँढने में, इतने सिनोनिम्स देख के, फिर ग्रामर चेक्स लगाने में। लेकिन बिकॉज़ आई केयर फॉर दीज़ सेंटिमेंट्स, आई केयर फॉर दीज़ इमोशंस ऑफ पीपल, मैंने वो टाइम दिया। और मुझे अंदर से खुशी होती है अपने आप के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि घमंड नहीं, लेकिन एक खुशी। और मुझे लगता है कि अगर मेरे से साथ एक इंसान भी कुछ सीख ले मुझसे, कि अगर जब कुछ हो रहा है उसमें आपका एटीट्यूड क्या था, यू आर बाउंड टू फ्लरिश। एंड आई नो मेरे से बहुत ज्यादा लोगों की अचीवमेंट्स हैं, लोगों ने पता नहीं क्या क्या नोबेल प्राइज एंड व्हाट नॉट, बिग रिस्पेक्ट। लेकिन हमेशा ये भी होता है कि आपने जर्नी कहाँ से शुरू करी ना, आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, और फिर आप कहाँ तक उसको लेके गए, आपने अपने आसपास का वर्ल्ड कैसा बनाया जैसे। तो मैं सच में बताऊँ तो मैंने जब मैराथन करी, मैंने अपनी फैमिली चैट पे लिखा, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, वेरी यू वेरी नो। तो आई लव माई सेल्फ नाउ। So that is the transformation. And all those incidents played a role. Staying with Nani, speaking Haryanvi, उन लोगों की वो हँसी। वहीं पे मेरी एक सिस्टर हैं, सबसे बड़े वाली दीदी, पुनीता दीदी, उन्होंने मुझे ऐसा फीलिंग दिया कि नो यू बिलॉन्ग हियर, इवन इफ यू डोंट स्पीक, यू बिलॉन्ग हियर। तो साथ में दोनों चीजों को नोट करो। मुझे ये भी लगता है कभी कभी हम नेगेटिव्स को इतना ज्यादा नोट करने लग जाते हैं कि उसके साथ जो अच्छा हुआ है वो छोड़ देते हैं। दोनों को साथ लेके देखो, लाइफ बहुत सुंदर है। 2 चीज़ें मैं ऐड करना चाहता हूँ, 2-3 चीज़ें। आई थिंक योर जर्नी एंड माय जर्नी इज़ लिटिल बिट सिमिलर बिकॉज़ मैं भी मेरी शुरुआत गाँव से हुई है, बिल्कुल ठेठ पंजाबी गाँव से। 4 साल हाँ, पंजाबी स्कूल में पढ़ा हूँ, जहाँ पर हम वो पानी होता है ना पीछे जहाँ पर हाँ, हाँ, ऐसे उसमें हम ट्यूबल, नहीं ट्यूबवेल नहीं, जो हाँ, स्कूल हाँ, के पीछे एक टोबा बोलते हैं उसको, जहाँ पर हाँ, छप्पड़ है ना, उसमें हम हम्म, अपनी तख्ती साफ करते थे, या, उसपे फिर वो लगाते थे हाँ, और फिर उसको कलम से लिखते थे। हाँ, आई हैव गॉन टू दैट स्कूल जहाँ पर प्योर या, पंजाबी बोली जाती थी एंड आई कैन जब मेरे डैड हमें आई वाज़ आई थिंक 4 और 5 इयर्स ओल्ड हमें लेके गए इंग्लिश स्कूल में पढ़ाने के लिए हैदराबाद, सिकंदराबाद। आई कुड रिलेट माय मैं बहुत स्ट्रगल करता था एंड सिमिलर इंसिडेंट हैपेंड विद मी और मेरा ये द रीजन आई एम शेयरिंग दिस इज ये जो मेरा मानना है ये जो आपके
बचपन में इंसिडेंसेस होते हैं, ये आपको आगे कुछ सिखाने के लिए होते हैं। उसको नेगेटिव कहो या पॉजिटिव करो, लेकिन मेरे लिए तो मैंने जितने भी एग्जाम्पल देखे पॉजिटिव ही होता है। आई वॉज केंद्रीय विद्यालय में मेरा एडमिशन हुआ। पहले मैं एक इंग्लिश स्कूल में पढ़ा, उसके बाद केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन हुआ, एयरफोर्स स्टेशन बेगमपेट। आई रिमेम्बर आई वॉज इन क्लास 6th और 7th। और वहां पर एक मैडम थी इंग्लिश वाली, जो केंद्रीय विद्यालय की इंग्लिश हिंदी की बात कर रहा हूँ। एंड तो वो सबको एनकरेज करते हैं कि केंद्रीय विद्यालय इंग्लिश में बात करो, ये वो, राइट। Yeah. और मुझे इतनी अच्छी इंग्लिश आती नहीं थी, मैं गांव से आया था। एंड उसने बोला, तुमने क्यों नहीं किया होमवर्क? तो मैंने एक सेंटेंस बोला जो आज तक मेरे दिमाग में बैठा हुआ है, मुझे नहीं पता। और मैं अभी भी झिझकता हूँ अंग्रेजी बोलने में। मैं आई एम वेरी कंफर्टेबल विद पंजाबी और हिंदी। हाँ, एंड वो सेंटेंस था कि उसने बोला कि क्यों नहीं होमवर्क किया, मैं तो तुमने किसी ने, मैंने कहा मैडम नो वन इज गिविंग मी, या नोबडी इज गिविंग। आई थिंक बडी और वन था। उसने बोला, ओह यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। yeah. आई डोंट नो, राइट। अभी अभी भी मैंने कोशिश नहीं की, बड़ी होना चाहिए, नो वन इज गिविंग मी। और उस टाइम क्लास की सफाई हो रही थी, तो मैंने, एंड हमें झाड़ू मारने को बोलते थे क्लास में बच्चों को, राइट। तो किड्स वुड क्लीन द क्लास, और मैंने झाड़ू मारा। कहती तुम झाड़ू बहुत अच्छा मारते, तुम झाड़ू मारने लायक हो। एंड दैट सेंटेंस मेरे आज तक दिमाग में है। लेकिन मैंने वो सेंटेंस को इंस्पिरेशन के तौर पे लिया कि मैं एक दिन ऐसे लेवल पे पहुंचूंगा दैट पीपल विल रिमेंबर मी। और वो मैडम तो पता नहीं कहाँ होंगी, आई डोंट नो। बट Yeah. उसी केंद्रीय विद्यालय में आई वाज द बेस्ट एथलीट। I went to become the best student in my school, different Kendriya Vidyalayas. I was Yeah. the topper in multiple subjects, even English topper in my class, ninth grade में। और Yeah. 12th में मेरे मैथ्स में हाईएस्ट नंबर आए थे। तो बहुत कुछ ऐसा हुआ। एंड I'm very proud of my journey and thank you to that teacher जिसने मुझे ऐसा कहा था। तो मेरा मानना है कि कुछ इंसिडेंसेस आपकी लाइफ में होते हैं आपको मोटिवेट करने में। इट्स अप टू यू हाउ यू गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट। सो आई जस्ट वांटेड टू टेक अ मोमेंट एंड No, it's beautiful, Jesse. It's really beautiful. मतलब ये हर मतलब जो भी इस बात को सुन रहा है आज, अगर वो इंसान ये सोच सकता है कि कभी भी कुछ भी हो, अगर उस टाइम आपका नज़रिया क्या है? पर पता है साथ में जैसे जब आप बोल रहे थे ना, आप जब उस इंसिडेंट की बात कर रहे थे, आप अपना ये रिवाइंड करके शायद देखना, आपका माथा अलग तरह से था और जब आप अपनी अचीवमेंट्स की बातें कर रहे थे, आप थोड़ा आगे को आ जाते और जी आपकी आँखों में एक चमक आती है। तो इवन अगर आप इतना भी अपनी बॉडी को समझेंगे ना, जी बाकियों के लिए कह रही हूँ, आपने तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया जैसे। तो व्हेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर बॉडी एंड योर अनकॉन्शियस माइंड, यू स्टार्ट टेकिंग दीज थिंग्स पॉजिटिवली कि ये मेरी, जब ये जो सेंटेंस उन्होंने बोला कि आप झाड़ू लगाने के लिए, आपकी बॉडी ने उस टाइम पे बहुत कुछ किया होगा प्रोसेस, और आपने उसको उससे अनवाइंड किया है अपने एक्शन से। दिस इज जस्ट, ये मुझे किसी कैरेक्टर की याद दिला रहा है, लेकिन अभी उसके लिए नहीं। आई जस्ट वांट टू कीप दिस मोमेंट फॉर यू। इट्स वेरी नो नाइस। एक्चुअली आई द रीजन आई या। वांटेड टू ब्रिंग दिस अप इज कि आपके पास भी ऐसी बहुत सारी स्टोरीज होंगी जो इस बुक में कैप्चर्ड है। एनीथिंग दैट रिमाइंडिंग यू दैट यू वांट टू हाईलाइट? एक्चुअली मैं बुक को इसलिए देख के बोल रही हूँ क्योंकि मैं रियल नेम्स नहीं आई वांट टू जी यूज, बिकॉज मेरे दिमाग में जब मैं कहानी बोलती हूँ तो मेरे उसमें वो रियल नेम्स आ जाते हैं। लेकिन इसमें एक अयान करके कैरेक्टर है, जी वो एक ऑडिटर हैं जी और उनका स्टोरी है कि जब वो व्हीलचेयर पे थे तो वो रिहैब में गए और वो अकेले रिहैब में थे, उनकी फैमिली का कोई नहीं था। जी एंड हाउ ही टुक इट इन अ पॉजिटिव स्ट्राइड दैट नो वन इज सपोर्टिंग मी
and still I have to come out of it. He needed some supporting hand with him. Mhm. I was thankful I was there, but in the end, he did it. He took all those things positively. So that's a very nice story. I would encourage anyone, everyone to read that. And then there is another story of Meera, who could never enter the room where her father expired. Like that room was her father's. जब उनके पापा नहीं रहे तो वो उस room में जा नहीं पाई काफी time तक because of certain things which wouldn't reveal now. But yes, on the similar lines though. Yeah. Wonderful. Friends, you're watching a Desi Adda Live with Jassie Parmar. And today my guest is Reshmi Nashier. She's an accomplished writer. She's releasing her second book worldwide. It's already released. Uh, More than 100 copies have been sold. We'll be coming back with more testimonies and some more insights to कहाँ से आप book खरीद सकते हैं or some backstory about this. We'll be right back. Reshmi, your journey is very inspiring. Second book that you've written look seems like very interesting book. Who are the people in your mind when you were writing this book? कोई target audience था? Mm. The target audience, I would not say, Jesse, that there was only, it was for everyone and anyone who feel more but can't express all of what they are feeling, right? It is for the people who, जैसे जब हम हंसते हैं, कई आप देखते हैं कोई लोग people smile कर रहे हैं, but people who know what is behind the smile. And people who want to explore, who want to know more about themselves, who want to, who has wish or a desire or passion to know more, align themselves with their soul, their mind, their body, and to flourish themselves. So that was my outlook. And when I gave it for testimonials, so to psychologists, to people who have achieved in their life and who are coaches and mentors. One of them is Deepta Khanna. She actually wrote in her testimonial, she's one of those who gave me early encouragement. She was in love with the book, but she also said this is for anyone and everyone who wants to navigate life and align with themselves. Having said that, it is a very big tool for psychologists, people who are studying psychology. So she requested, actually, she said that I should go and meet university and ask university people to keep the books with them. Also for coaches and mentors. And you will hear in Shaurya's testimonial as well that she's using some of the journaling prompts for her coaching and mentoring, which was, or for her sessions, which was really a very big thing for me to take and absorb and feel that yes, the book has achieved its purpose in one way or the other when the people who I'm looking up to are saying this. And this is also for the people who struggle with certain questions. So if I can just tell you some questions that sometimes our self is saying, Mhm. why do I keep choosing what I don't want? You will hear this question so many times from coaches and mentees, or even people in their daily life, right? Real life, yes. Yeah. And sometimes people also say, why does the truth feel so quiet? So if these kind of questions are coming to your mind, this book is for you. If you feel that question like, what if I am not ready? Sometimes when people are doing this transition from who they are made to believe and who they are actually is, then they have this question, what if I am not ready? So if you have ever encountered that question, this book is for you. If you have encountered a question, why do I feel exhausted even when nothing is wrong? Then this book is a guide for you. I will take the last question. Why do I vanish in the rooms where I most want to be seen? Wow.
Yeah. Beautiful. These are questions that many people might be asking. I have asked life, and I may have the answer now, but at that moment I didn't have the answers. And if you are trying to find some book is for you, this is available on Amazon and multiple outlets where all people. I think it's available worldwide starting today. Ye- it's yeah, so it's available in Amazon.in, Amazon.com, Amazon.co.uk, Amazon Singapore, Amazon Dubai. So worldwide on Amazon platform, the book is available. In India, it is also available on Notion Press website, and it is also available on Flipkart. And if you are an Amazon Prime member, there are no delivery costs. That goes for all, probably Prime users will know it Yeah. already. It is already on Kindle, Goodreads. Very soon there will be an audiobook for people who like to listen, not read, or people who are abled differently. For them, audiobook as well. So yes, these are the platforms that it is available on, and I hope you all grab a copy if this conversation seems interesting to you, or if you want to be diving into some people's real life stories. And Reshmi, it's time to bring our next here what this gentleman has to say about the book. Hello, everybody. The book Lived Fully, Felt Deeply from Reshmi Nashier is about life. Like the dragonfly on the cover, you can read more about the spiritual meaning of the dragonfly inside. It stands for transformation, inner strength, and flexibility. It invites us to engage and embrace our deepest emotions. Reshmi shows us, by her own stories and reflections, to let our emotions flow and acknowledge them without judgment. Only by engaging with these deep emotions, we can grow and achieve a deeper understanding of ourselves. I'm very grateful to Reshmi that she inspired me and hopefully you to find your inner voice, your soul, and life purpose through awareness and silence. Highly recommended. Um, I'm just taking a pause, but I'll also share something here. Actually, yesterday I was with two friend of mine, and they asked me, "Do you have friends in office, real friends?" And he's one of those. And they were surprised that you can find friends in the professional environment as well. He's my manager. When my real manager went on sabbatical, he joined our organization for a short time. And in that journey, because he himself is a coach and a mentor, and he's from Holland, he's a Dutch person, a Dutch by nationality. But there's a very big story of Dragonfly, which I'll try to cover in short. When I asked him for testimonial, he was in his apartment and reading, and there was a dragonfly in his balcony or a terrace, and the dragonfly was making that humming sound, buzzing, like she was buzzing or he was buzzing, I don't know. That buzzing sound was there, which was kind of bothering him. So he went and checked, and that dragonfly had only one, it didn't have one wing. And he was like, okay, by morning she might not survive. And then he saw a cat in the balcony. So he was kind of sure might not survive. He went upstairs after reading the book, and but in the morning, first thing he wanted to check whether dragonfly is there or not. And to his surprise, dragonfly was there. Humming, buzzing sound was there. And then dragonfly even flew away. So she could fly also. And he, in that moment, said that to me, one word that came to mind for Reshmi and for this book was dragonfly. For him, dragonfly is a symbol of resilience.
and he shared with me the spiritual meaning, which is in the book of Dragonfly. But what he didn't know that time, because the people who I gave the testimonial, they only got the written text. Hmm? Jesse, now you Yeah. see how some things are so connected when you are aligned with people. So every Mhm. section has a picture, okay? And in section Yeah. 2, I don't know if it's visible or not, Yeah, there it is was very visible. Uh-huh. a picture of two dragonflies, one dragonfly without a wing, a broken wing. Wow. Wow. And was it And before this testimony, before you, is he, it a coincidence or, it's a pure coincidence. He didn't know that. The oh my designing of the God. images, yeah, I'm, I don't, Oh it my, gives me goosebumps. I have like, yes. now also I can feel when he gifted me the bookmark of Dragonfly internally what I was thinking, what was happening to me. And this particular section is about that when you have a broken wing, you need somebody to support you to find your pearl. So that's why there is a dragonfly with all the wings. There is one dragonfly without a wing, and there's a pearl in between. Um, Wow. yeah, it's Amazing. Amazing. it's Ah, and the first story title is Bruise Without Breaking Skin, which now I won't say more, sorry. so here's the next testimony for you, Reshmi. Hi folks, this is Amit Jain and I've had the pleasure of knowing Reshmi for more than a decade now. When Reshmi reached out to me a month back with the draft of a book asking me to read it, I had no hesitation in doing so. And it's been an amazing and a rewarding experience. The title of the book, Lived Fully, Felt Deeply, pretty much epitomizes the way Reshmi leads her life. And I knew that the contents are going to be really authentic. The stories in the book are compelling, they're inspiring, and very, very thoughtful. And I genuinely felt that this book gave me an opportunity to reflect and come into much better connection with my inner self. So, for those of us who are looking for more meaning, more reflection, and getting in touch with what really drives our relationships, both personal and professional, I would urge you to grab a copy of Lived Fully and Felt Deeply, and it's going to be a very rewarding experience. Thank you, Ah, Jesse. Wow, it's very special. It's Amit Jain, and he's a chairperson of Sanofi India, and also a very dear person. And when he said, it's like the title also says how I lived my life and what I believe in, he's totally, totally right there, Jesse. awesome. There's another one for you. The Invisible Yes, a conversation between two lives. We listen in on two people who outwardly chose different paths, but both were shaped by the same unconscious yes they gave a long time ago. One said yes to being needed. The other disappears in order to belong. Their conversation does not offer advice. It reveals recognition. How true. I'm Niriti Mehta, living in the Netherlands, working at Heineken. He's Niriti Mehta. She works with Heineken, and I would say her title properly, so I'm just going to look into it. She's Regional Talent and Leadership Manager at the Heineken Company, and she's a coach as well. She's reading an expert from the book, which is also very close to me. And the line she picked actually is a conversation between two people. And that's throughout in this book, you will see that two people are talking to each other. And that's where they are kind of learning or just getting that moment of realization and acknowledgement from each other. So, really Nice. special. Thank you. All right. Here's the next one.
I came to know Reshmi Nashier, as the mother of one of my son's friends. And it's a really interesting thing when we tend to meet people as adults. It takes a while to obviously get to a very authentic and deep connection, but it also takes a while to really understand their inner depths and how they think. So I must say it was a joy and very rewarding when Reshmi shared the first excerpts of her beautiful book, Lived Fully, Felt Deeply. Because this is a lady that I always admired as someone that was authentic, had a sense of humor. But in her writing, I discovered reflections that are so heart and mind opening and that resonate so deeply, no matter who you are and in what walk of life. You could be a research student, a corporate professional, or a human being just navigating some normal chapters in your life, and you're going to find there is something in this book for you that you're going to see as so recognizable and giving you that pause for thought, which sometimes makes all the difference in our lives to have an insight that connects and drives us to take action that is meaningful. So I'm truly blown away by the rich depth of this book, which, as it says on its cover, truly comes from a place of both depth and authenticity. And I congratulate Reshmi on having the courage, but also the generosity to actually share some of these deep reflections in a way that so immediately connects and elevates the thinking of those that are our audience. So I can't wait to get my hands on the rest of the book, and I really look forward to that and to buying my own copy. Thank you, Reshmi. Congratulations and all the best. Wow. Now, Khushi. thank you, Deepta Khanna. And she is a chief business leader in Philips Personal Health. She herself is an author. She has written a book already, and her son has written 5 books on Amazon. So Wow. it speaks in volume to hear these highlights from her. Really very special. And one thing to highlight here, she was the one who noticed in the book, which as an author, I know I did write with that intention, bringing 2 characters together, because I really believe we do not live in isolation. We are social. We need people with us. And she said that in your stories, when I saw you have woven 2 stories together, और 2 लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हुए अपनी कहानी कह रहे हैं. She said, I know that thing about you, but it came out so well in the stories. So I was like, that was a wow moment for me. Awesome. Let's move on to the next. Hello everyone, this is Azad from Bangladesh. I am a development professional currently working as a head of livelihoods and enterprise for International Center for Integrated Mountain Development, shortly called ICIMOD, in Hindu Kush Himalaya region of Asia. Reading the book, Live Fully, Feel Deeply, I feel that Reshmi does not share stories. She opens a space of honest reflection through a ground inner voice and meaningful conversation. Though the stories are fictional, but the emotions are very real. Knowing Reshmi as a former colleague, I always admired her ability to listen deeply with thoughtfulness and integrity. This book feels like a natural extension of that presence. I am truly grateful to read it and recommending to others read this very nice book. Thank you, Reshmi, and best wishes. Wow. Wow. Very, very special, Jesse, because, he's a colleague. Yeah, we have worked together on some projects, but he doesn't know me as a person more beyond the professional world in the books. So when I was taking testimonials, I made sure that it also goes to the people who don't know Reshmi and how Yeah. much will they connect. And when he just read for testimonial and he dropped his note, and I was like, "Are baap re," you know, if somebody who doesn't know me can connect with my words, with the stories in the book, uh, I think the Nice. book did its work. Yeah. Thank you.
Hi, I'm Shaurya Gehlawat. I'm a psychologist and the founder of TWS, which is a mental health therapy practice. And today I want to talk to you about this beautiful book. It says, Lived Fully and Felt Deeply. From the time I read the title, I think I was mesmerized by what we will find inside it. And I also want to speak to you about the author, Reshmi Nashier. I've been very lucky and honored that I was one of the first few readers who got to read this book as well as the author's first book, Puchka in the Polder. You must get the copy of that as well if you want. You'll find my testimonials at multiple places, at the back cover, somewhere inside, which just speaks volumes of how I think about this book. And I think it has a lot of good parts, but my favorite part will be the fact that every chapter ends with a few reflection, introspection, and journaling questions. So for me, a psychologist and therapist, I think a lot of the questions are things that I would love to use with my clients and patients. And I hope you enjoy reading this book as much as I have and as much as all of us have. शी इज शौर्या गहलावत। जस्सी और वो मेरी बड़ी सिस्टर की बेटी हैं, डॉक्टर जी। पुनीता। Mhm. एंड she that's my personal relation with her, and she was the first child on our side of the family, so we all have pampered and whatnot. And seeing her being an individual she is in her professional journey, she's a psychologist. She has her own company, Talk with Shaurya, and s- she also did something similar to you, Jesse, that she started something, she went into the corporate world, and then she followed her passion, and she did study psychology, and then now she's making huge impact in the life of people because I read her stories on Insta, her posts on Insta, and what people are talking about her. She was featured in Vogue as well. And so she had a talk with Pankaj Tripathi also about men support and psychology and more deeper than that. So hearing Wonderful. this, that she's taking journal prompts of this book into her sessions, मेरे लिए तो शब्द नहीं है जैसे अब मेरे पास ना मुझे पता नहीं मैं क्या बोलूं पर क्या नाम है मेरे इनका लिए पूरा? बहुत बड़ी बात है। शौर्य शौर्या? गहलावत। क्या बात! गहलावत। Wonderful. Shaurya, thank you so much for giving this testimony. And I would love to speak to Shaurya if she has time. It's amazing. Like you're connected so many wonderful people in your life, Reshmi, and interesting, very interesting. Thank you. Thank you, Jesse. All right. So the next testimony is going to be an audio testimony. I don't know why. You can tell us why it's going to be audio testimony from this beautiful lady. She said she doesn't want to come on the video. Yeah, she said that she's very comfortable in audio recording. She's, I wouldn't say shy, but she was hesitant to do, I think, the video Okay. recording. All right. Yeah. Let's play. I have authored books on acupressure and acupuncture. I happened to meet Reshmi ma'am during our personalized yoga sessions. She is extremely lovely, sensitive and soft-spoken, kind person. First of all, I would like to give her a big applause and congratulate her for her wonderful, sensitive, and highly commendable achievement. Live fully and felt deeply. Each and every line written by her speaks volume of her work, dedication, and deep understanding of human minds and emotions. She have expressed herself very effectively, beautifully, and artistically with her powerful, magical, and soulful words. I truly feel blessed and fortunate to be associated with a person of her caliber, a great artistic writer. The book reflects level of her enlightenment based on journey of her life experiences through which she have touched readers' emotions. She have given breath to each and every character of the story, as if we are not reading
but visualizing and feeling the characters. You know, her techniques to communicate ideas, to inspire feelings and emotions is magical and purely authentic, very natural. Her deep thinking and understanding of human emotions creates a deep connection that goes beyond the written words. Childhood emotions encompass a range of feelings that develop and change as children grow. At times, there is no emotional first aid. In her book, she has beautifully crafted those emotions as pearls and flowers in a garland. It's an amazing and wonderful contribution to the society. It's like a mirror work with heart touching words. Lastly, I must say, dear Reshmi ma'am, you are a beautiful soul on a powerful journey. So keep your sparkle alive. God bless you. Much love. Thank you so much. All right, this is um, really a good testimony in audio version. I wish she had come on video. She has a beautiful face and a beautiful voice and beautiful thought process. Indeed, Jessie, she's amazing. I have done yoga sessions with her. She's a wellness coach as well, and she has written books on acupuncture as well. And when I gave her the book for testimony, she not only read it, but she took a printout of it and then shared with her son, with her colleague. She said to me that, thank you for sharing. And I have not seen such a book till date, which shares it in a story form, but also gives the journaling prompts, also gives the reflection from the author to take. And at the same time, it also guides you that in case you want to pick few things from the book, how to do that. And this conversational style with the self, with others, was unique for her. And I was like, wow, thank you. Thank you, Dr. Preeti. Wonderful. And Yeah. Rishmi, it's with this we are coming to the end of this episode. It's really nice and it really feels. I feel very honored that what you have achieved, what you have done, especially this 100 books already sold. I thank you for giving me this opportunity to feature you on my show and coming on to Desi Adda and connecting with Desi Junction and spreading using this platform to reach out to more people who will benefit from this. Thank you. If I can take just 2 minutes, Jesse, sorry. Um, I doubt, Jesse, you even have an idea the impact that you have created on the lives of people. I still remember when we were doing song requests on Desi Junction, when one of our friends had the whole show almost dedicated to his wife for her birthday. And when me and Anil used to wait for your show that and we will do these dedications, but some magic happened in those moments. So I feel blessed. I feel honored that I'm doing the launch of this book in your show with you because for me, you are also somebody who lived life fully and felt it deeply and knows what it means to follow your passion. So I wouldn't have done it any other way, Jesse. Thank you. And big thank you to all the listeners, to everyone who's giving time and also is on a journey of self exploration and growth. That in itself is a big thing. And if you take time and order this book and read it, so thank you for your time and feel free to reach out to me for anything and everything. I'm on Insta, I'm on Facebook, I'm on LinkedIn. My username is Reshmi Nashier. Feel free to write to me on reshmi.nashier@gmail.com. I would be happy to hear your feedback, reviews, but above everything, thank you for your time. And I wish you all the very best in life to everybody, but especially to you, Jesse.
Thank you so much, Reshmi. It means a lot to me that when we started this journey on Desi Junction, I don't know how many people know, but this is all volunteer run organization, and we've been blessed Yeah. कि हमारे पास more than 200 people who came, served, and इस प्लेटफॉर्म पर ग्रो होकर आगे बढ़े एंड नथिंग कैन बी मोर फुलफिलिंग देन अगर आप किसी को कोई मार्गदर्शन दे सकते हैं आई थिंक सिमिलरली योर बुक इज डूइंग गोइंग टू डू द सेम सेम थिंग आपकी स्टोरीज आपके जो उसके अंदर किस्से मेंशन है I'm very very confident it's going to touch many lives and good luck with the launch and thank you so much once again. Thank you. Thank you, Jesse, and thank you, everyone. Thank you. Thank you. नहीं, Uh, नहीं, Jesse, uh, you I don't know, you are for me a symbol जिसने अपना पैशन फॉलो किया, जिसने मतलब मुझे अच्छा लगता है जब तुमसे बात होती है। मैंने तुम्हारी बहुत सारे जब पॉडकास्ट देखी हैं, मैंने सुमिता दीदी की भी देखी है, मैंने औरों की भी देखी है। अभी रिसेंटली आपने किसी की थी yes. एंड इट फेल्ट सो रियल, सो ऑथेंटिक, कमिंग फ्रॉम हार्ट। There no artificial layers, it's pure from heart. So I don't know. कभी तो आपसे मिलेंगे obviously, जरूर uh, and would love to talk more to you. Yes, for sure. एब्सोल्युटली नहीं नहीं Yeah. बिल्कुल No.